Hello, my dear students. Today we are going to discuss the Olympic Games from class 8 English textbook. In this video, we will cover the post reading section. In the earlier videos, we have discussed SGP 1 and SGP 2. आमे आज द ओलंपिक गेम्स रो पोस्ट रीडिंग सेक्शन आलोचना करिबा। पूर्व वीडियो गुडी करे आमे SGP 1 और SGP 2 आलोचना कर सारछे। तुम जदि से वीडियो गुडी को देखिना ताहाले डिस्क्रिप्शन लिंक रे पाइबो, ताकू देखिनियो। सो लेट्स बिगिन। Comprehension activities. MCQ, multiple choice questions. Fill in the blanks choosing the correct options. 1. Days started the modern Olympic Games. Option गुड़िक हला A. Zeus, B. The King of Mycenae, C. Hercules, D. Coubertin. The correct answer is yes. Coubertin started the modern Olympic Games. 2. Hercules was not only strong but also this. A. Wild, B. Clever, C. Dangerous, D. Foolish. Correct option is clever. 3. The Olympic Games are held once in every years. The options are 2, 3, 4, 5. The correct option is 4. 4. The Olympic motto is dash. A. Swifter, higher, stronger. B. Swifter, nearer, stronger. C. Swifter, quicker, stronger. D. Swifter, weaker, stronger. The correct answer is swifter, higher, stronger. 5. The most important thing in the Olympic Games is A. To win, B. Not to win but to participate, C. To participate to win, D. To become a winner. Correct answer is not to win but to participate. B. Match paragraphs under A with their themes under B. Write the paragraph numbers in brackets. One has been done for you. एठी ए सेक्शन रे पैराग्राफ रो नंबर गुडी को दिया जायछि। बी सेक्शन रे पैराग्राफ रो थीम गुडी को दिया जायछि। गोटिए उदाहरण दिया जायछि। पैराग्राफ 1 हम देखिबा तार थीम होछि द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स began in the valley of Olympia. पैराग्राफ 1 रो थीम सहित पैराग्राफ रो नंबर टी को जोड़िबा कहबो। एबे हम देखिबा पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 रो
हिम हौची The king of Mycenae was jealous of Hercules as he was more famous than him. Now, paragraph number 3. The theme of paragraph number 3 is Zeus, the king of gods, took Hercules to Mount Olympus. Paragraph number 4. Paragraph number 4 रो थीम टी हला A young Frenchman, Coubertin, started the modern Olympic Games. Paragraph number 5. Paragraph number 5 रो थीम हला The Olympic symbol with 5 rings stands for the unity of the 5 continents. Paragraph number 6 रो थीम हला The tradition of starting and closing the Olympic ceremony. Okay, next देखिबा listening. The teacher reads the following paragraph aloud. Students listen to him or her carefully and fill in the blanks. Paragraph टी को टीचर पढ़िबे एवं स्टूडेंट माने ताकू सुनी शून्य स्थान पूरण करिबे. Hercules was famous for his strength. The king of Mycenae was jealous because Hercules was more famous than he was. So he ordered Hercules to do many dangerous tasks. He was sure that Hercules would die while trying to do them. However, Hercules was not only strong but also clever. He found the ways of completing all the 12 dangerous and difficult tasks. Okay, let's continue. Speaking. Your teacher will read aloud the 5th paragraph line by line. You repeat after him or taking turns. शिक्षक 5th paragraph टी को गोटे गोटे धाड़ी पढ़िबे. तुमे सब ताको रिपीट करिवे. The Olympic Games are held once in every 4 years. The Olympics symbol with 5 rings
stands for the unity of 5 continents. At least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow, and green, appears in the flag of each country that takes part. The Olympic motto written in Latin is swifter, higher, and stronger. Coubertin felt it described the aim of great athletes all over the world. Okay, next, vocabulary. Some describing words naturally go with certain nouns. Match the describing words given in group A that go with nouns in group B. एठारे describing words को noun सह मैच करिया ପାଇଁ कहैछि ग्रुप ए रे describing words बा adjectives गुडिक दिया जाइछि ग्रुप बी रे noun गुडिक दिया जाइछि हमको ताको मैच करिया हबो देखिबा कोन अछि प्रथमे hard work deep trouble good advice strong feeling main idea heavy traffic. Okay, next, usage. When we talk about past events we use simple past. जेतेबे आमे अतीत रे घटि जायथिबा घटना को वर्णना करू आमे सिंपल पास्ट टेंस व्यवहार करू सिंपल पास्ट टेंस रो स्ट्रक्चर टी हला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एठी V2 कहले आमे वर्ब रो सेकंड फॉर्म को बुझियो एग्जांपल सुधीर gave me his book yesterday एठी वर्ब होची give रो वर्ब 2 होची gave हमर एठी व्यवहार करा जायछि gave सुधीर gave me his book yesterday जेहेतु yesterday गतकाली गोटे अतीतर घटना तेणु ताकू वर्णना करिया पे आमे पास्ट सिंपल gave व्यवहार करछि another example we watched a film last Sunday आमे गत रविवार गोटे फिल्म देखिलु here the verb is watch the verb form 2 is watched that is used here we watched a film last Sunday so watched is verb 2 so we subject watched verb a film object example from book the ancient Olympic Games
began in the valley of Olympia. Here the verb is began, that is the V2 of begin, begin आरंभ होगा, begin, began, begun, एठारे verb to व्यवहार कर जाए. Now find similar sentences with simple past in the first 4 paragraphs. Write at least 5 sentences. बर्तमान टेक्स्ट बुक रो प्रथम 4टी पैराग्राफ रु एई भली सिंपल पास्ट व्यवहार होइतिबा 5टी सेंटेंस हमको खोजी लिखिबा को. So let's begin. Hercules was famous for his strength. Here was is the past simple tense. 2. King Mycenae ordered Hercules to do many difficult and dangerous tasks. Here verb 2 is ordered. 3. Hercules found the ways of completing all the tasks. Found V2. 4. Zeus took Hercules to Mount Olympus. Took, simple past. 5. Baron Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games. Started, simple past, verb 2 is used. So हमें जानिले पास्ट इवेंट्स बा अतीतर घटना को वर्णना करिया पे हेले हमको सिंपल पास्ट टेंस व्यवहार करिया को हबो जेउठी सब्जेक्ट सह verb form to व्यवहार. दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर. आको हमको मन रखिया को हबो. एटा सबुले लिखिया समय रे निहाती आवश्यक. नेक्स्ट, uses. We use simple present to say about actions that usually happen. Structure, subject plus verb 1 or verb 5 plus subject. आमे सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर व्यवहार करू जेते बेले सबु बेले घटुथिबा घटना बा जो घटनाटी सबु बेले घटी थाए सेही भलिया वाक्य रे सेही भली सेंटेंस रे आमे सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर व्यवहार करू. फॉर एग्जांपल, द स्कूल ओपन्स एट 10 AM. एठी ओपन रा verb 5 लिखाई छी, यूज कराई छी. काहे कि ना स्कूल सबु बेले 10 रे खोले. तो जो कामटी सबु बेले हुए ताको व्यवहार करिया पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर व्यवहार करू. Another example, a woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch. Here the verb form is lights. जणे महिला ग्रीक प्राचीन पोशाक पिंधि ओलंपिक टॉर्च लाइट्स का प्रज्वलित करती. सबुले करती. प्रति ओलंपिक गेम्स रे एभली हुए. तेणु एठी सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर व्यवहार होई. Now find similar sentences with simple present in paragraph 5. Write at least 4 sentences. Paragraph 5 रे एभली सिंपल प्रेजेंट टेंस व्यवहार होइतिबा 4टी सेंटेंस हमको बाछि लिखिबा को. Let's see. 1. The Olympic symbol stands for the unity of 5 continents.
stands, simple present. Two, at least one of the colors of the rings, blue, black, red, yellow and green, appears in the flag of each country. Appears, simple present. Three, the Olympic motto written in Latin is swifter, higher, stronger. Is, simple present. Four, the Olympic Games are held once in every 4 years. Are held, एठी हम देखिबा आर हेल्ड एटा सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर रो पैसिव फॉर्म एक्टिव पैसिव विषय रे तुमे जानिथिबो किछिटा आगु को जानिबो इन डिटेल जेउठी ऑब्जेक्ट को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाए ताकू आमे पैसिव वॉइस बोली कहू एठारे पैसिव वॉइस व्यवहार होइतबा जगु होल्ड ता पैसिव रे आर हेल्ड होइए ओके नेक्स्ट राइटिंग राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 where did Olympic Games begin look at the italic did begin where केउठारे ओलंपिक खेल आरंभ होइतिला आंसर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स began in the valley of Olympia in Greece ग्रीस रो ओलंपिया ठारे प्राचीन ओलंपिक खेल आरंभ होइतिला 2 who was Hercules answer Hercules was a great hero 3 what did the king order Hercules to do answer the king ordered Hercules to do many difficult and dangerous tasks 4 who started the modern Olympic Games किए आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ करथिले आंसर Baron Pierre de Coubertin started the modern Olympic Games Baron Pierre de Coubertin आधुनिक ओलंपिक खेल आरंभ करथिले 5 what is the time gap between one Olympic Games and the other गोटे ओलंपिक खेल और अन्य ओलंपिक खेल मध्य रे केते समय व्यवधान है आंसर द टाइम गैप बिटवीन वन ओलंपिक गेम्स एंड द अदर इज 4 इयर्स दुईटी ओलंपिक खेल मध्य रे समय व्यवधान 4 वर्ष है 6 what do the 5 rings stand for पांचटी रिंग कौन रिप्रेजेंट करती द 5 rings stand for the unity of the 5 continents ओलंपिक रो पांचटी रिंग पांचटी महादेश को महादेशर एकता को रिप्रेजेंट करती who lights the Olympic torch Olympic torch किए जलाती A woman dressed in Greek robes lights the Olympic torch. जने प्राचीन ग्रीक पोशाक परिहिता महिला ओलंपिक टॉर्च प्रज्वलित करती 8 How long is the Olympic torch kept burning? ओलंपिक टॉर्च को केते समय पर्यंत प्रज्वलित रखा जाए
Answer: the Olympic torch is kept burning until the games close. Olympic torch को Olympic खेल शेष होगा पर्यंत प्रज्वलित करी रखा जाए। 9. What do the winner participants think about? विजेता अंशग्रहणकारी खेलाड़ी कौन चिंता करती? Answer: the winner participants think about the hard work and training they had to do to come to the games. विजेता अंशग्रहणकारी माने चिंता करती से माने खेल को आसिया पई केते कठिन परिश्रम ओ ट्रेनिंग करछि। 10. What is the most important thing about the Olympic Games? Whose message is it? Olympic खेलर सबुठारु मुख्य जिनसटी कोन? तार संदेशटी कोन? The most important thing about the Olympic Games is not to win but to participate. It is the message of Baron Pierre de Coubertin, the founder of modern Olympic Games. Olympic Games रो सबुठारु मुख्य जिनसटी हला जितिबा नुह बरं भाग नेबा। एहा ओलंपिक गेम्स रो प्रतिष्ठाता बैरन पियर डी कुबर्टिन को संदेश। B. You have already matched the paragraphs with their themes. Write 6 sentences as per the example given below. आमे पूर्वरु पैराग्राफ सह तार थीम को मैच कर सारचे। वर्तमान प्रति पैराग्राफ पई गोटी लेखा सेंटेंस हमको लिखिबा को हबो। गोटे उदाहरण दिया है 1. The first paragraph is about the ancient Olympic Games that began in the Valley of Olympia. प्रथम पैराग्राफ रे ओलंपिक प्राचीन ओलंपिक खेल ओलंपिया रे आरंभ होतिया विषय कहै। 2. The second paragraph is about King Mycenae who ordered Hercules to do many difficult and dangerous tasks and how Hercules completed it. द्वितीय पैराग्राफ रे मिसिनेर राजा हर्कुलेस को किपरि कष्टसाध्य और विपज्जनक कार्य सब करिया कहले और हर्कुलेस ताको किपरि संपूर्ण कले से विषय कहले। 3. The third paragraph is about Zeus who took Hercules to Mount Olympus. तृतीय पैराग्राफ रे जियस को विषय कह जायछि जे हर्कुलेस को ओलंपस पर्वत को नहीं जायछि। 4. The fourth paragraph is about a Frenchman, Baron Pierre de Coubertin, who started the modern Olympic Games. चतुर्थ पैराग्राफ रे जणे फ्रेंच व्यक्ति बैरन पियर डी कुबर्टिन जे आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतिष्ठा करथिले तांका विषय रे कहै छै। 5. The fifth paragraph is about the Olympic symbol with 5 rings which stands for the unity of the 5 continents. पंचम पैराग्राफ रे ओलंपिक सिंबल जोठार की 5टी रिंग अछि जहा की 5टी महादेशर एकता विषय रे कहै। 6. The sixth paragraph is about the tradition of starting and closing of the Olympic ceremony. षष्ठ पैराग्राफ रे ओलंपिक खेल रो आरंभ और तार शेष विषय रे कौन कौन
ट्रेडिशन अच्छी से विषय कह ओके we have discussed the post reading section of the Olympic Games. Thank you for watching the video. भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबा जोगु धन्यवाद. जदि भिडियोटी भल लागिछि ताहाले लाइक और सब्सक्राइब निश्चय करନ୍ତୁ.